बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास की केमिस्ट्री का है। इससे पहले हम एक लेक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड उसकी टाइप्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो है वो कैसे लिखा जाता है। हमें पता है जैसा कि एलिमेंट्स होते हैं इनको हम सिंबल से इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H and the symbol of lithium is Li and the symbol of sodium is Na। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं अब तक पीरियोडिक टेबल में 118 के करीब जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं उनके हमारे पास सिंबल्स हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम सिंबल्स इंडिकेट करते हैं एलिमेंट्स को, इसी तरह से हम केमिकल फार्मूले जो होते हैं, केमिकल फार्मूला इज बेसिकली an aggregation of a group of atoms which are combined together through different bonds. For example, covalent bond, coordinate covalent bond and ionic bond and metallic bond are also present between the metal ions. The first rule to write a chemical formula is that the symbols of elements are written side by side in order of positive ion first and negative ion later. तो मींस के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इनमें कैटायंस जो होते हैं पॉजिटिव आयन आर आल्सो नोन एज कैटायंस and negative ions are also known as anions. Cations को हम पहले लिखेंगे और anions जो हैं इनको हम बाद में लिखेंगे. What are cation and anions? Ions are basically those atoms or group of atoms that have some charge. Charge may be positive or negative. If a positive charge is present on an atom and that is called cation, and if a negative charge is present then that is called an anion. Cation or positive ions are formed when an element loses an electron. जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसे पॉजिटिव चार्ज आता है और उसे हम कैटायन का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव hydrogen atom and the first shell of the hydrogen atom, the valence shell of hydrogen atom contains only one electron and when it loses one electron it becomes H positive. H positive is also known as proton. Why H positive is called as a proton? Because in the neutral form hydrogen has one proton and one electron in its one proton in its nucleus and one electron in its valence shell or first shell, and it has no neutrons in its nucleus. So when it loses its one electron from the first shell, from the valence shell, it contains only one proton. Electrons are lost by hydrogen atom and it contains only one proton and there is no number of neutrons that are present in its nucleus, so we called hydrogen as a proton. So that is a cation. In the same sense, sodium has one electron in its valence shell. When it loses one electron it becomes Na positive. And Na positive is a cation. And in the same way, Cl negative, Cl chlorine is the symbol of chlorine and its atomic number is 17. Its first shell contains 2 electrons, second shell contains 8 and the third shell contains 7 electrons. So it requires one electron to complete its outermost shell. So chlorine gains one electron and becomes Cl negative. Cl negative. And the nucleus of chlorine contains protons and neutrons. Chlorine, the atomic mass of chlorine is 35 and atomic mass of chlorine is 35.5. So it has 17 protons and 18 neutrons in its nucleus and it has 17 electrons in their
one electron, so it contains 16 electrons. When it loses one electron, so proton is equal to 17 and electron is equal to 16. इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल नेट चार्ज अगर हम देखें तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 माइनस. So chlorine gains one electron and the charge on it is 1 minus, so it is negatively charged ion, so it is called as anion. So the first step to write a chemical formula is symbols of elements are written side by side in order of positive ion first and the negative ion later. For example, we have sodium chloride. In sodium chloride, Na positive and Cl negative. Na positive written before and Cl negative is written after Na positive. तो सेकंड जो स्टेप है केमिकल फॉर्मूला को लिखने का हमारे पास है कि वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल. फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, Cl नेगेटिव 1 नेगेटिव. तो वैलेंसी उसकी कहां पे लिखेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे हम. इसी तरह से हमारे पास सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो सोडियम की वैलेंसी है 1 पॉजिटिव. सोडियम की वैलेंसी हमारे पास है 1 पॉजिटिव, सो हम इसकी वैलेंसी को इसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखेंगे 1 पॉजिटिव. ठीक है, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल. फॉर एग्जांपल हमने सोडियम की राइट टॉप कॉर्नर पे वैलेंसी इसकी लिखी है, क्लोरीन की राइट टॉप कॉर्नर पे वैलेंसी लिखी है, क्लोरीन. इसी तरह हमारे पास जो है ऑक्सीजन है, the atomic number of oxygen is 8. We have already read about oxygen in our previous lesson. The atomic number of oxygen is 8, so it has 8 protons and 8 electrons in their shells. 8 protons are present in its nucleus. So in neutral form it has no net charge, but when it gains 2 electrons in that way, for example oxygen gains 2 electrons and gets charged 2 negative. O2 negative. O2 negative. 2 negative means it gains 2 electrons to complete its octet, to complete its valence shell. So the valency of oxygen is 2 negative. 2 negative is written on the top right corner of its symbol. The second step. First step हम साइड बाय साइड लिखते हैं, पॉजिटिव आयन को पहले और नेगेटिव आयन को बाद. सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उनकी जो वैलेंसी है उनको हम टॉप राइट कॉर्नर पर लिखते हैं. Third, what is the third step to write a chemical formula? The third step to write a chemical formula is the valency of each ion is brought to the lower right corner by cross exchange method. क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से हम इनकी वैलेंसीज जो हैं इनको हम जो है वो चेंज करते हैं, हम लोअर राइट कॉर्नर पर लेकर आते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव calcium and chlorine. For example, we have calcium and chlorine. Calcium. The valence shell of, in short, the valence shell of calcium have 2 electrons, so it loses 2 electrons and gains a valency of 2 positive. And in the same way, chlorine. The atomic number of chlorine is 7. It has 7 electrons, valence shell, so it loses 1 electron and becomes Cl negative. So we can write it as Ci2 positive and Cl negative. In the same way, Ci2 positive and Cl negative. अब हमने क्रॉस, व्हाट इज क्रॉस एक्सचेंज मेथड, इसकी ये जो वैलेंसी है 1 नेगेटिव क्लोरीन की, ये हम क्या करेंगे, कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पर ले जाएंगे, और कैल्शियम की जो वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, इसको हम क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पर ले जाएंगे. तो ये कैसे लिखेंगे हम, Ci, ये जो है आपके पास 1, यहां पे इसको लिखें या ना लिखें, ठीक है. दूसरे नंबर पे हमारे पास है Cl, ये क्लोरीन के यहां पे कौन सी वैलेंसी लिखेंगे, जो कैल्शियम की है, कैल्शियम के टॉप राइट कॉर्नर पर लिखी हुई है, वो क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पर चली जाएगी, Cl2. So the chemical formula of
कैल्शियम क्लोराइड इज CiCl2। अगर हमारे पास इन दोनों की वैलेंसी सेम है, इफ the valencies of both the ions are same as Ci, or the valency of Ci is 2 positive and O is 2 negative, and in the same way the valency of sodium is +1 and that of chlorine is -1. If the valencies are same then they are offset. अगर इनकी वैलेंसी सेम है तो ये कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे की वैलेंसीज को इनको कट कर देंगे, हम इनको नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 प्लस है और इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है, तो इनको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो हम लिखेंगे CiO, that is the chemical formula of calcium oxide। एंड इन द सेम वे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, इन दोनों की वैलेंसीज भी देखें आप सेम है, +1 एंड -1, ये भी क्या होगी, कैंसिल हो जाएंगी और हम क्या लिखेंगे, NiCl। अगर इनकी वैलेंसीज डिफरेंट है, if the valencies of these ions are different then they are written in the lower right corners by cross exchange method as in CaCl2, जैसा कि हमने CaCl2 में लिखा। बट अगर इनकी वैलेंसी सेम आ रही है, जैसा कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव, +1 है, -1 है, तो फिर हम इनको क्या लिखेंगे, लोअर, इनको हम जो है वो क्रॉस कर देंगे, ठीक है, इनको हम खत्म कर देंगे, दे आर ऑफसेट, इनको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास जो आयंस हैं, जो हमारे पास कैटायन और एनायन है, अगर ये एक एटम से ज्यादा एटम्स का मुश्तमिल है, यानी इफ एन आयन कंटेन्स मोर देन 1 एटम्स दैट इज कॉल्ड अ रेडिकल, जिसे हम रेडिकल का नाम देते हैं। तो इनकी जो वैलेंसीज होती हैं, तो इनकी वैलेंसीज जो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर इनका जो चार्ज इनके ऊपर जो होता है, होल इनके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज लिखा होता है, वही इनकी वैलेंसी होती है। इनके फॉर्मूलों को कैसे लिखते हैं वो हम इस स्टेप में देखेंगे। If an ion is a combination of 2 or more atoms bearing a net charge on it, if an ion is a combination of 2 or more atoms, if an ion is a combination of 2 or more atoms, that is called a radical. We can define radical as an atom or a group of atoms, a group of atoms, only a group of atoms bearing a net charge on it. एटम्स का एक ग्रुप जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। उसे हम क्या नाम देते हैं, रेडिकल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सल्फेट आयंस SO4 2 नेगेटिव एंड फॉस्फेट आयंस PO4 3 नेगेटिव, दीस आर रेडिकल्स। तो इन रेडिकल्स के केमिकल फॉर्मूलाए जो हैं, इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है। तो इनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वही उनकी वैलेंसी। फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव में जो 2 नेगेटिव है, दैट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट आयंस, एंड PO4 3 नेगेटिव, दैट आर फॉस्फेट आयंस, एंड 3 नेगेटिव इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फेट आयंस। तो इनका फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल वी वांट टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, तो अगर हम इसके साथ कैल्शियम को अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे। We have Ca2 positive, we have already read about that Ca contains 2 electrons, whereas shell, so when it loses 2 electrons, it contains 2 positive charge. So the valency of calcium is 2 positive and that of phosphate ions PO4 3 negative. The valency of phosphate ions is 3 negative. इस तरीके से तो इनके ऊपर जो नेट चार्ज है ये इनकी वैलेंसी है। इनको हम इनका फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे हम कि ये इनके ऊपर जो नेट चार्ज है इनको हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड से इनके लोअर राइट कॉर्नर्स पर ले लेंगे। जैसा कि PO4 3 नेगेटिव में 3 नेगेटिव आ जाएगा कैल्शियम के पास Ci3। अब आगे पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक ही एटम होता था, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो हम लिखते हैं CiCl2, इसका फॉर्मूला लिखते हुए CiCl2 हम लिखते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम Ci, तो फॉस्फेट की वैलेंसी तो कैल्शियम के नीचे आ गई है। अब आगे अकेला अगर हमारे पास एलिमेंट होता तो हम इसको ऐसे ही लिख देते। यहां पे हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो group of atoms that are called radicals, radicals are always written in parentheses when they are written in a chemical formula. For example PO4, तो हम इन PO4 को ब्रैकेट्स में लिखेंगे, parentheses में लिखेंगे PO4 और
इनकी जो वैलेंसी है, कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे जाएगी, तो हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज CI3PO4 2, CI3PO4 twice, CI3PO4 twice, that is the chemical formula of calcium phosphate. And the next one is aluminium sulfate. How can we write the chemical formula of aluminium sulfate? The valency of aluminium is 3 positive. The valency of aluminium is 3 positive. The atomic number of aluminium is 13. It has 13 protons and 13 electrons in their shell. So its valence shell or outermost shell contains 3 electrons. It loses these 3 electrons one by one and gains the valency of 3 positive. So the valency of aluminium is 3 positive, and in sulfate ions, the sulfate ions SO4 2 negative. Sulfate ions, the valency of sulfate ions is 2 negative. So we can write the valency of sulfate ions at the lower right corner of aluminium, and the valency of aluminium is written in the lower right corner of sulfate ions. So how can we write these? Aluminium Al2 negative, Al2, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस इनको लोअर राइट कॉर्नर पर लिखते हुए इनके साइंस नहीं लिखते, चार्जेस इनके यानी प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता। हमारे पास है Al2। आगे हमारे पास इसी तरह आपको पहले बताया कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स यहां पे आ जाएंगे, तो उनको हम पेरेंथेसिस में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे SO4। अब हमने वैलेंसी लिखनी है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी सल्फेट आयंस के राइट लोअर कॉर्नर पे लिखनी है हमने, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 3। सो द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 thrice. The formula of aluminium sulfate is Al2SO4 thrice, and that of calcium phosphate is CI3PO4 twice. So we can write these chemical formulae if they are present in the form of group of atoms in this method. ठीक है, तो ये हमारे पास थे methods of writing the chemical formula। इनमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि एलिमेंट्स में से हमने पॉजिटिव आयंस कैटायंस को पहले लिखना है, एनायंस को बाद में लिखना है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के हमारे पास जो आयंस हैं इनमें इनको लिखा जाता है राइट टॉप कॉर्नर पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास Ca2 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा, क्लोरीन की वैलेंसी को राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी यानी आयंस जो होते हैं उनकी जो वैलेंसी है उनको राइट टॉप कॉर्नर्स पे लिखा जाता है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से उनकी वैलेंसी को चेंज करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि इनकी जो वैलेंसीज हैं अगर ये सेम है, ठीक है, ये एक फोर्थ पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इनकी जो वैलेंसीज अगर सेम होगी देन दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ CiO, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, both the ions have same valency so they are offset. In the formula of sodium chloride both the ions have same valency so they are offset. If they are not same then they are written in the chemical formula. For example in case of CaCl2 the chemical formula of calcium chloride is CiCl2, इसकी +2 है, इसकी -1 है, तो इनको हम लिखेंगे, अगर डिफरेंट है तो लिखेंगे, अगर सेम है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर एट द एंड हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो आयंस से मुतल्लिक होगा, कैटायंस